request that this is the session, this is the workshop training on the topic communication skills. And as teachers, we are teachers and we think and we believe that we are good communicators. We have what to tell and what to do. क्या सीखना है, क्या जानना है. Communication, simple. There are many people who think that if you are good English, you are good communicator. And we know that it's not the truth. There are many people who are quite good at English but not good at communication. Communication is skill that has to be acquired. You know, when you have to find something, when you have to buy something, कुछ भी खरीदना हो तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए. We need investment. जितना पैसा खर्च करेंगे उतना अच्छा सामान मिल सकता है. जितना टाइम आप अपने आप को देंगे आप उतने अच्छे निखर सकते हैं, बन सकते हैं. So let's take this opportunity to refine ourselves a little bit. थोड़ा सा हम लोग बहुत निखरे हुए हैं, थोड़ा सा और निखर जाते हैं और इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं कि क्या कम्युनिकेशन स्किल हमारे में है, क्या उसको निखारने की जरूरत है कि we are okay, we are excellent, we are brilliant, we don't need any upgradation. Why this in-house training then? This is the need of time as a teacher. There are stakeholders that we have to answer to: parents, students, our colleagues, our administration. So we need to be a good communicator. I have one habit of whenever I go in a class or adjust in class, I communicate with the children and come out with some surprising facts. And the facts are, when you are able to communicate with children, with coming down to their level, they are able to express themselves. They start raising questions. They are feel comfortable and friendly. और तब आप पहुंचते हैं उनके मन की बात जानने के लिए. मैंने ये पाया कि जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हु इज योर फेवरेट टीचर, कुछ नाम निकल करके आते हैं. When I ask them who is your favorite teacher, कुछ नाम रिपीटेडली निकल के आते हैं, वही नाम. कुछ बात है उनमें, कुछ तो बात होगी कि उन्हीं का नाम क्यों आता है. We are 100 and still they stand out. आगे इसके ऊपर बात करेंगे. Let's see what slides I am having, and meanwhile I request Honorable Principal Sir to please guide and speak few words. Sir के पास है mic. As you are going to choose the topic communication skill, I think that clarity should be always there. That I think the characteristic feature of this communication. Whatever you are going to tell, you should be clear in your frame of mind. And the second thing is that whenever we used to go for any particular topic or the subject that we used to go in the classes, you should have a command over that particular topic. Unless and until your communication skill is being very good, or you are being not good at your subject, then definitely you will be finding the problems. Alone the communication skill will not do. Because we are not supposed to be here working as the PR, not we are the public relation officer, but we are supposed to be a very good facilitator, a very good teacher. And for this, the communication, whenever it's being combined with that of this, the knowledge, this the application, this the understanding, only then the class can be somewhat is the joyful, and as well as it can be well understandable for the student. Okay?
Yes, sir. Thank you, sir. And definitely, it's true that if there is no knowledge, you cannot communicate. Whatever knowledge you are having, you have that ability to impart that to the students. So it becomes important that even if you are knowledgeable, you have tremendous knowledge, you have to have that communication skill to impart that knowledge to the students. So it becomes important. And you know, when communication comes, only 7% is words. 7% is words, and rest is your attitude, your behavior, your verbal and non-verbal communication. So words comprises of only 7%. Just imagine. Yesterday only, like when sir was saying he will give the training, and he picked 3. There must be something that when I smiled, he must have got something. Okay, I am interested or disinterested or both. So I want to say that there was something that Yesterday, I was looking for 3 idiots. thank you, sir. And you know, 3 idiots did wonder in 3 idiots. So I hope this session is going to be interesting because, again, when it comes to communication, sense of humor. When I go to that particular point, when I say the children, they have common favorite teacher. तो मैंने पाया कि पढ़ाने के अलावा एक स्किल उनमें थी, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर सर, कि वो बच्चों को खुश करके हंसा के क्लास को लाइटर बना करके पढ़ाते हैं. तो क्या सिर्फ हम लोग क्लास को ह्यूमर लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए सिर्फ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी? नो, डेफिनेटली नो. तो कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो हम लोगों को अपने अपीयरेंस से लेके हमारा क्या बॉडी लैंग्वेज है, यू हैव टू ओज कॉन्फिडेंस, यू हैव टू ब्रिंग चिल्ड्रन टू योर नो कमांड, कि नोटिस करें, आपको ना भी सुनना चाहे तो सुने. आपको बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि किसी टीचर को देखते ही आप या किसी भी रिलेटिव या किसी भी बंदे को देखते ही सोचते हैं कि अरे वाह, वो ऐसा बंदा आया है जो महफिल में रौनक ला देगा. इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके पास रहती है बताने के लिए. सभी लोग सुनना पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं. तो कुछ तो बात है कि सुनने के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि आपको सुनने के लिए लोग रेडी रहें. कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देखते ही लोग सोचते हैं कि अब मतलब डैश. So let's and one thing more I want to add कि we all are resource person. हम लोग सारे के सारे में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी कहानियाँ, कम्युनिकेशन निकलेंगी कि आपके पास कहानियाँ खत्म नहीं होगी. बहुत सारे लोग, जब मैं आ रही थी तो लोग कह रहे थे कि why didn't you do online? हम लोग अपने जगह पर बैठे हुए थे. तो I said कि भाई एसी में बैठते हैं, कब मौका कम मिलता है और एसी में बैठ करके साथ मिल करके, और मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है कि सभी लोग सुन रहे हैं. मैं क्या बोल रही हूँ लेकिन सभी लोग सुन रहे हैं. थैंक यू एंड प्लीज गिव अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ. थैंक यू. Square, on the top a triangle, नीचे कीजिए ऊपर ना कब होगा. inside the square draw a rectangle. In the square draw a rectangle. In the square your choice. Draw a rectangle. In the square again draw 2 circles. Inside in the square.
In the square, draw 2 circles. At the image formed behind that, draw a tree. इमेज जो फॉर्म किया आपने उसके पीछे एक ट्री बनाना है. ट्री पेड़ रिच डन. And what I am observing, सभी लोगों ने डिफरेंट गलत नहीं किया, नहीं गलत नहीं किया. सभी लोग का ड्राइंग डिफरेंट है. सभी लोगों का ड्राइंग डिफरेंट है. आप लोग सब लोग आपस में एक दूसरे से ड्राइंग मिलाइए जरा आपस में एक दूसरे अगल बगल को मिलाइए. क्या एक जैसा है? इज इट सिमिलर? कोई भी कह रहा है कि भाई सिमिलर है या हो सकता है किसी का जिसको लोग ना देखें. आप लोग अगर एकदम सिमिलर जस्ट थिंक कि भाई क्लास में जो होता है वही पूरा एक्सेप्शनल होते हैं. देखिए रितु मैडम देख ले आई हैव सीन. मुद्दा ये निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया that everyone has done the same instruction in way. क्या आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? What do you think about this? Anybody? So the communication, when it comes to communication, that people, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो बोलता है बस उन्हें बस मौका मिलना चाहिए बोलते रहने के लिए. तो अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग. शशि मैम. Understanding and interpretation. How you interpret the thing. How you interpret the things. I have interpreted and interpret according to your perception. According to your perception. तो ऐसा ही होता है ना क्लास में भी. हम लोग तो बहुत नॉलेजेबल मानते हैं कि उस क्लास के बच्चों को वहाँ तक पहुँच करके हम वही चीज़ बताते हैं, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग आता है. तो व्हाट इज देयर इन कम्युनिकेशन? इससे कम्युनिकेशन से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस. हाउ मेनी ऑफ यू से यस? सबका हाथ नहीं उठा. मतलब सब लोग लिसनिंग नहीं कर सकते हैं. मतलब लिसनिंग शायद या पैसिव लिसनर मतलब सुन बैठ गए. माय वॉइस इज ब्रेकिंग. वो भी नहीं सबका अलग अलग. फिर भाषा की भी समस्या आती है. हम लोग पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में समझेंगे. इंग्लिश वाले तुरंत समझेंगे. अच्छा. नहीं लैंग्वेज इशू इज देयर. लैंग्वेज भाषा जरूर सामने आएगी. हम लोग बोलते हैं इशू होता है लेकिन तुम कैसे समझोगे? हम तुम दूसरे थोड़ी देर से समझोगे. This is the best example of communication skill. English. This is what communication is, or interpretation and perception, right? और इसका भी आंसर आया कि भाई हम लोग क्या इसमें कुछ कम्युनिकेशन में कुछ कमी थी? राइट. इंस्ट्रक्शन वाज नॉट क्लियर. हम लोग ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसा करते हैं क्लास में. मतलब ज्यादातर नहीं तो मतलब काफी टाइम ऐसा हम लोग कर देते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्लियरली नहीं देते हैं कि बाय द वे यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल or a square of 2 centimeter. On the top you have to draw an equilateral triangle. In this square, on the bottom of the page line, you have to draw a rectangle of this centimeter. It means
that there was communication. जो तो communication जो हुआ, हम लोगों को जो instruction दिया, that was not clear. And जैसा सभी लोगों ने कहा कि yes, it is possible कि अगर हम अपना instruction सही रखें, यानी instruction means the way we are communicating with the children. Children तभी सुनेंगे जब आप उसको interesting way में बताएंगे कि भाई आपके subject में interest लाएंगे. Then only they will be sitting and listening. किसी को अगर पता चले कि भाई आज हमारा कल सबको डायरी जमा करना है, कल का लेसन प्लान बनाना है, सभी लोग सुनेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई अगले महीने से भाई बीए भी बढ़ने वाला है या फिर मतलब कुछ अलाउंस भी बढ़ने वाला है. तो बट दोनों के रिएक्शन में फर्क होगा. Isn't it? So this is what communication, what interest, what you are interested in. आप जिसमें इंटरेस्ट लेंगे वो चीज अच्छा होगा. हम लोग सोचेंगे कि अच्छा होगा, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा होगा तो कुछ अच्छा होगा. तो हम लोग ये सोचें कि भाई हम लोग अच्छा क्लास में करें तो बच्चे भी अच्छे ही परफॉर्म करेंगे. So it's all about your response. डायरी लिखनी है बहुत. So here, next slide. This is one short video. Please. पर ये मेरे साथ होता है. हाँ, most of the time. एक बार एक समय की घटना है. कुछ बच्चे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उसे मैंने कहा रोको नहीं जाने दो, रोको नहीं जाने दो. फिर उसे अगले ने कहा रोको नहीं जाने दो, रोको नहीं जाने दो. एक कॉमा से पंक्चुएशन की कॉमा से पूरा मतलब ही बदल गया. Yes, रश्मि मैम. That's what communication is all about. कि भाई आप लोग आए आगे 1 घंटा 1 मिनट अपना टाइम. It happens with is the moment we ask the students to let us go in the ground, they think yes, we are going to run in the ground, they will not listen to you. First of all, then we have to depute the monitors to collect them and then give the proper instructions. The moment you ask them, let us go to the ground, their feeling is that we have to run the ground. You want to say that if we say is that is their mindset. If we are going into the ground, the first opportunity that we will aware is that we will play there. Definitely. और बच्चों को गेम्स मिलना ही चाहिए. तो डेफिनेटली बच्चों को गेम्स बहुत कम मिलता है और जैसे ही they get the chance कि भाई जाना है तो मतलब उसमें कम्युनिकेशन आता ही नहीं है. उसके बाद ऑटोमेटिक सारा चीज होता है. I hope now it has start working. Sound. And this is the learning. पहली बार हम लोग इस तरह के पहले भी किए हैं, लेकिन आफ्टर 2-3 years we are doing it. तो कुछ glitches हैं and we will learn this. मतलब सुमन सर आप बुरा नहीं मानेंगे प्लीज बुरा नहीं मानेंगे. अजय हाँ सर आप भी बुरा नहीं मानेगा. तो दिस इज अबाउट दैट हाउ यू इंटरप्रेट
कम्युनिकेशन का सबसे पहला ये क्यों हम करते हैं कि अपनी बात पहुंचाएं, हमारी बात रिसीव हो, और जो हम कहना चाहते हैं वो ही सही तरीके से उनके जाए जिनको हम कन्वे करना चाहते हैं। तो इसमें जरूरत क्या है? जरूरत है चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, योर इंटोनेशन, कि आप कब आवाज ऊंचा करें कब नीचा करें। भाई ये बात की बातें सभी लोगों को पता है, लेकिन सभी लोगों को सभी बातें पता है, लेकिन पता क्या नहीं, कभी कभी हम लोग पता कर पाते कि उसे कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, और करना भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज जानते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात, अच्छा कल करेंगे एंड टुमारो नेवर कम्स, कल तो आता नहीं है कभी। तो कम्युनिकेशन गोल कि भाई हम अगर अपनी क्लास की बात करें, अपने टीचिंग की बात करें, तो हमारा गोल होता है चेंज द बिहेवियर ऑफ उसका बच्चों का, टू गेट एक्शन, टू पुट इनटू एक्शन, कि हम जो कह रहे हैं उनके पास पहुंचे और वो एक्शन में आए, ये नहीं कि सो जाए। सभी लोग एक बार हाथ ऐसे करेंगे, थैंक यू, प्लीज सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, थैंक यू वेरी मच। टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग कि आप जो बोल रहे हैं बच्चों के पास जा रही है, क्वेश्चन इंटरेक्शन, दैट इज व्हाट, कि आप श्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपकी बात बच्चों तक पहुंच रही है, बच्चे सुन रहे हैं आपको। टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन विद व्हाट, to what they have got, what you have interpreted, what you have told them, what you have taught them, whether they have understood or not. Get the information. How you will get? By asking right questions with right attitude. पहले से ही get up. पहले से ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो, बच्चा चुपचाप पहले से ही किनारे हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट सबसे और बहुत शैतानी करते पहले होते। कल क्या पढ़ाई हुआ था? पेज नंबर 25 पर क्या है? बेसिक डिस्कस करते ऑफिस पे, मतलब बच्चों को पहले से ही हम लोग तैयार हैं और उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वो दोबारा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही ना करे। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। वी मस्ट नॉट डू दैट इन द क्लासरूम कि बच्चे हम लोगों से डरे। दे मस्ट बी इनकरेज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, द राइट क्वेश्चन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वे जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या ये हमारा व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जब आपस में मीटिंग्स करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दैट यू आर अवेयर कि भाई हम लोग किसके सामने बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, किसके सामने कैजुअल रहते हैं। बट दिस रियली फैमिली बिकम मोर लाइक फैमिली। तो फिर हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों को अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर वर्क कन्वीनियंट एंड इजी, ताकि एनवायरमेंट, देखिए कम्युनिकेशन से क्या होता है ना, एनवायरमेंट जो है लाइट रहता है। अगर आप लाइटर एनवायरमेंट पर रहेंगे तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, और उसके साथ ही आपको ये सोचना है कि आपको देख करके किसी को ये न लगे कि माहौल भारी होने वाला है। Then next slide. अब यहाँ पर बैरियर्स क्या चीज का आता है? जब हम लोग बात करने का शुरू करते हैं कि नहीं आज से मैंने ठान लिया है कि आई विल बी गुड कम्युनिकेटर, तो कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? क्या ऐसा करें कि मैं बाकी को चांस भी बोलने का? इतना सन्नाटा क्यों है? Nobody wants to speak. For experience of communication, please develop the skill. This is skill. और प्रिया मैडम तो बोलेंगी, वो तो पता है क्योंकि वो बोल लेती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल उनका ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन देयर आर मेनी who shy away from speaking. So what do you think? What are the barriers? क्या barriers? यही है barrier कि आप चाहते ही नहीं है बोलना। यहाँ पर तो सिमेंटिक बैरियर हुआ कि आपके पास थोड़ी सी राइट वर्ड, राइट सेंटेंस
चूज करने में परेशानी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ना दैट व्हाट यू वांट, वेदर यू वांट इट और नॉट. फोर्सफुल, sometimes it has to be self guided. खुद से कोशिश करने से थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन होगा. तो I would like to call upon ये क्लास में ऐसा ही होता है. Who will answer? She will answer, that will answer. I will not. रश्मि मैम बोलना चाह रहे थे लेकिन बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने. आपने अभी सबको कहा कि हाथ उठाइए और सबने किया. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम नरेंद्र मोदी के स्पीच में देखते हैं कि जब भी वो भाषण देते हैं तो बीच में जरूर पूछते हैं. तो ऐसा है और इसमें पूरी की पूरी भीड़ जो है वो जवाब देती है, जिससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की बात को सुन रहे हैं. दूसरा, सिस्टर बीके शिवानी के भी जितने आते हैं मोटिवेशनल स्पीच, उसमें उनका भी यही रहता है. वो हर बात को जब बोलती है तो क्या है या नहीं, और उधर से जब रिस्पॉन्स आता है तो पता चलता है. और ये दोनों ही जो है बहुत अच्छे स्पीकर हैं जो हम लोग के सामने एकदम एग्जाम्पल है. हाँ, और वो जहाँ वो बोल रही होती है वो सबसे मतलब उनका एकदम बन जाता है कि सब लोग उस बात को सुनते ही हैं और उससे एग्री भी होते हैं, अग्री होते हैं, लेकिन इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते. ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है. आई वांट टू ब्रिंग यू ऑल ऑन द फ्लोर कि भाई आप लोग आइए, कि बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोगों को पता है. आप लोग आइए, बोलिए. कम्युनिकेशन इज अ स्किल, इट हैज टू बी हॉन्ड. आप मौका मत छोड़िए, जब मौका मिलता है बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि हम लोग को ये इन हाउस ट्रेनिंग है ना आउट ऑफ कंपल्सन है. If it is out of compulsion, we have to do it. And when we have to do it, why not with a smile? Why not with some amount of learning outcome? Isn't Prince Sir saying good news? Prince Sir is hardly out there. इसके बारे में हाँ बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर. आपके हिसाब से आप कौन सा बैरियर है कि आपको लगता है कि मैं अच्छा कम्युनिकेशन, अगर ये चीज मेरे में होती तो मैं अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता. केवल शेयर करना चाहिए. अपने पास जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी नॉलेज हो, सबको शेयर करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ. ठीक है, शेयर तो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर पाते. क्या वजह? आप जैसे आप अपना एग्जाम्पल दीजिए कि बहुत सारी बातें हैं शायद आप शेयर नहीं कर पाते. क्या मतलब ऐसी चीज है जो आप बचाना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि कुछ बात है कि नहीं? मैं शेयर करता हूँ. वो शेयर कभी लाभ देता है, कभी हानि देता है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने शेयर किया, उसका रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा तो उल्टा रिस्पॉन्स आ जाता है. मेरा होप रहता है कि वो मुझे फायदा देगा, वो मुझको नुकसान देता है. तो लगता है कि शायद मैंने शेयर करके गलती किया है. सीमा मैम भी बोलना. एक और बात सामने आती है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें ये भी देखना होता है जो श्रोता है वो जिस विषय पर मैं बोलने जा रही हूँ या जिस पर मैं कहना चाहती हूँ ये उनकी रुचि की है कि नहीं. क्योंकि अगर वो सामने वाले को इस पर इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कोई तो, और आप फिर जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर इंसान चुप हो जाता है. ये भी एक रीजन है. सीमा मैम बोलेंगे. In general, it is lack of confidence. Lack of confidence. In general. Good one. गुड मॉर्निंग. No language problem. Communication is not language. It is about conveying emotional. Sometimes what we are talking about. Language is also sometimes becomes a barrier. Yes. Good morning everyone. Good morning sir and everyone present here. When a child speaks, he or she is totally naive and innocent and flawlessly they go on speaking without having any consideration in his mind or her mind.
as we grow up as an adult, what happens, there are multiple factors which stops us and which are the hurdles and obstacles while we communicate. They are measuring scale as well. What is, how much to speak, what to speak, when to speak. These are the factors, and moreover, when we talk about any language skill, it's about your vocabulary. We want to speak. We have plenty of things within us, but we are unable to express due to lack of word or due to the structure. You can say there. So I would like to say that there are multiple factors, and then confidence. Many times you are a good speaker, but there is something, since childhood we have been introvert, shy, and we shy many a times while expressing. So this is all together in which you can say personality development, and you can say gesture, multiple factors I would like to say. Thank you. But sometimes people, when it's necessary also, they do not speak. Rather they know everything. Thank you, Manisha ma'am. That was the point, confidence and language, and there are sometimes that you are lacking in the sentence forming and the other patterns that we are unable to communicate. Nupur madam, I am enthusiastic. Thank you. Hello everyone. I would cite an example from my daily life experience. I used to teach the students from other states in the online classes. When I get any student from South India, I really face it very difficult to make him or her understand using only the pictures. So language is again a big barrier in front of me. Sometimes, not always, but sometimes when you do not know the language of other states, you are unable to make the other person or the child understand whatever you want to say, whatever you want to make him understand. So I believe language is one of the barriers. And sometimes when a coded signal or language is sent to other person, and the person on the other side is not able to decode the language or the signal, that time also the person faces barrier. That is called an example of communication barrier. Thank you. Thank you, ma'am. Those are the communication barriers. Another barrier is barrier to superior. बहुत सारे लोग अग्री करेंगे. I guess many of you will agree कि भाई सुपीरियर से बात करने के नाम पर ही हाथ पांव ठंडे हो जाते. सर के पास जाना है, तुम जाओ, आप जाओ, let the coordinator go. Don't you think this barrier has to be removed when you want to speak to your superior? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं डर लग रहा है, सब डांट देंगे. हाँ है, डांट देंगे. फिर अगली बार अच्छे शब्द से बोलते हैं ना. एक बार डांट खाने में क्या जाता है? भाई ऐसा काम भी ना करें कि डांट पड़े, सबसे बड़ी बात है. Isn't it? So barrier to superior. ये चीज हम लोग के दिमाग में रखना होगा कि whoever is superior, whoever is the boss, he or she is doing their duty and she has to accomplish some task. And काम करना आसान है, काम करवाना है ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क. इसमें अल्पना मैम एक्सपर्ट है. अल्पना मैम एक्सपर्ट है काम करवाने में. So we have big resource over here. तो ये इनके पास शब्दों का भी बहुत अच्छा शब्द चुनाव करते हैं कि काम आसानी से हो जाए. अल्पना मैडम, आप एक बार माइक पकड़ेंगे. Actually, it depends on individuals that how to take the role. Because different people's join any organization with different purpose and different attitudes. So overall, this is the responsibility of the person who is behaving like a leader of the organization or any team. That how you handle all the different people and you try to fulfill your own goal. What about your goal? So whenever responsibility given to me, I also try to cooperate all the members, and ultimately my goal is
What about that how to take the work from different people and fulfill my use? So choosing the right person to get the work done and having the right approach is a good. Thank you, Alpna ma'am. And ये सबसे छोटी-छोटी बातें होती हैं अब we learn from each other. Thank you. And other is attitude of superior. अल्पना मैडम काम नहीं कर पाएंगी अगर इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो उनको सपोर्ट ना करें, कॉपरेट ना करें. मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ अगर सर कॉपरेट नहीं करें, आप सब लोग कॉपरेट ना करें. थैंक यू वेरी मच. तो ये बहुत जरूरी है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर कि आपके सुपीरियर का क्या एटीट्यूड है. उस पर भी कम्युनिकेशन, द वे अ पर्सन गाइड्स यू. फिर पेन लिया, वी हैव टेकन द पेन, वर्कड. तो कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड है कि यस ही हैज चोजन that the right person to choose and make them work. That is communication, that is verbal, non-verbal, both. Another is fear of challenge of authority. Authority को challenge करने से लोग डरते हैं और उस चक्कर में challenge कर नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं गैप आ जाता है कि कहीं मेरी बात को अलग तरह से इंटरप्रेट न कर लिया जाए. Lack of awareness. When we are not aware of what our duties are, then we cannot speak about the other part, right? Subordinate, unwillingness to communicate. मैं चुप रहा हूँ, उनको बोलने दो, मैं चुप रहा हूँ. बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग अपनी बात कहते ही नहीं है. हम लोग सोच लेते हैं कि पहुंच जाएगा बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है. You have to come out of the shell and speak. You choose the right word, क्योंकि बोलना तो जरूरी है, right? And now lack of proper incentive. इसको हटा दिया जाए next. So what is good communicator? कौन होता है? If you are able to convey your things, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ अगर आप पहुंचा पा रहे हैं, you are a good communicator. आप adequate है, whatever you want to communicate, you have enough knowledge about that. You are good communicator. Integrity, आप सारे लोगों को सोचते हैं, सब एंगल से सोचते हैं, you are good communicator. Timing, most important. किसी भी टाइम पे कुछ भी बोलना is not proper. ये सारी बातें already we know. Okay, how to get the communication to expand the related skill? So as we said, and time is 11 is 11 बजने वाले. तो इसका क्या करें? हाँ ये. तो ज़्यादा communication skill डेवलप करने के लिए हमें अपना oral, written and non-verbal skill को डेवलप करना पड़ेगा. oral कैसे? अब इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप यूज करते, सारे लोग अगर कुछ बोलते तो टाइम बहुत है, बहुत लग जाता है, लेकिन फाइन सभी लोग नहीं बोल रहे हैं. लेकिन जब भी मौका मिला, अब हम लोग क्लास में बहुत बोलते हैं, ऑलरेडी बहुत बोलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा शांत करना ही पसंद करेंगे. आई गेस दास सर वुड लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन दिस स्लाइड. माइक दे दीजिए. आ रहे हैं वहीं चले जाए, सब सामने ही चले जाए. Good morning, sir, and my respected colleagues. It is just like a bolt from the blue. I was not certainly mentally prepared, but since Ritu Madam has called, so I cannot control myself. I will sure say something. I think that so far as communication skill is concerned, the old age tradition of grandma used to tell stories to the children while sleeping. This practice is being abandoned. So this practice should be started. And if you are listening very well, and if you are responding, Dadima used to tell, समझ रहे हो ना,
और वो पूछती थी, जब तक आप हाँ कर रहे हैं तो समझ रही है कि मेरा स्टोरी बच्चा सुन रहा है. The moment you are not responding, she thinks that you are sleeping. So the communication is a bridge between two souls. Whatever you are communicating, there is no language barrier. The laborers of Bihar used to go to Calcutta and Assam, and they learn the language of Bengali. कैसे हम मेरे को तेरे को बम्बई जाते ही सीख लेते हैं. The main problem, the main barrier is that all the language teachers, they are using that grammar should be strong. No need to have a strong grammar. You allow the children to speak. There may be some mistake. Then if they start speaking any language, whether it's a Maithili, Maghi, Kannada, any language, then the grammar will be learned later on. So my take is that I want to tell you something, a true story. You have to bear me, because here we all are learned, but the need of the hour is of honesty. Regarding honesty, I will say my story, and you have to bear it. Once a visitor in the port of Chandragupta Mall came, and he inquired their success of a teacher depends upon the disciple. यदि आपका बच्चा IAS, आपका बच्चा IPS, साइंटिस्ट या एक गुड ह्यूमैनिटेरियन बन जाए, तब आप सक्सेस में है. महात्मा बुद्ध का शिष्य था आनंद. रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, और अर्जुन थे शिष्य द्रोणाचार्य के. तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द टीचर. So now the visitor wanted to meet Chanakya, who made Chandragupta Mall. So he was thinking that he wants to be living in the palatial building, but when he went into deeper, he was told that you go in the jungle, and he is living in a very small hut. So while he was entering the hut, he saw that Chanakya was working with writing in some paper with the lamp. He was informed that a visitor has come to meet you, so he put off the lamp. उसने उस लाइटिंग को या लैम्प को बुझा दिया. तो then the visitor was not surprised. Again he put on another lamp. Then he was surprised. Then he could not resist himself in asking, and he asked, Chanakya ji, आपने why you have put off that lamp and why you have burned this lamp? Then he replied that time I was working for the Chandragupta Mall, which was my official duty. So official oil was used there. Now you are talking me in personal capacity. So it is my personal lamp and this is my personal oil. So I am using. So this is the height of honesty, and he was honest to the point. So need of the hour is that we must be honest to our professor. The second story I am going to tell, that is of Ratan Tata. Ratan Tata was in the flight, and he was sitting along with his auditor, chartered accountant, and the chartered accountant was telling him that, sir, if we will do it in such a manner, then crores of rupees can be saved. Then Ratan Tata told, is it according to the law? क्या जो हम करेंगे ऐसा तो क्या अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इनकम टैक्स है? बोला कि यस सर, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनकम टैक्स. Then he asked, is it ethical and moral? Then he replied, no sir, it is not ethical, not moral. So then I will not accept your proposal, I will not endorse your proposal. So the need of the hour is that we are very learned, but the commitment, sir, which sir is always saying that the BSCB and the TV Transport Nagar has only one difference. The caliber of the teacher is not less than the teachers of BSCB, but we have something lacking in the commitment. So the communication is very important part, and we all are very good communicator. So the right time, but you should also know that
Only doing but is not good thing, but the brevity is the soul of mind. We should speak little, but that should be very, very useful and practical and feasible. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Master. Brevity is the need of the time, short and crisp. And communication must be clear, short and crisp. That is the demand of the time, because we do not have much of the time, and we are almost up to the time. Positive vibes in the class. So it is important that you are having a good, happy attitude in the classroom. At the time, you convey your thoughts, that what you are thinking, what do you think of the class, and what you have planned for the day. Practice effective communication skill. That has to be practiced. Koi bhi cheez practice makes a man perfect. So it is important that we must practice. If we will not practice, it won't work. So with this, words, thank you for bearing me. I thank all of you with folded hands for listening to me.